ये यहाँ से पुराना इतना तो नहीं। उसको ऊपर अपर राइट में भी लेके जा सकते हैं ना। मूव कर सकते हैं राइट ऊपर रखते हैं। मैं ना वो ईयरफोन लेके जा रहा लेकिन वो दे नहीं रहा क्योंकि फिर वो ब्लूटूथ से कनेक्ट डिस्कनेक्ट होगा। राइट तो मैं अभी इसको ठीक है इसको यहाँ पे पर मुझे अनम्यूट म्यूट करना था। हाउ डू आई डू इट? म्यूट अनम्यूट करना यहाँ से जो नीचे बाहर आ रहा है ना इसी में यहाँ से म्यूट कर। डॉक्टर आशुतोष यूट्यूब पे और वेबसाइट पे लाइव हो गया और फेसबुक पे अभी 10 मिनट्स में कर देंगे लाइव। फाइन डॉक्टर पीयूष, एक जो हमारा डायरेक्ट लिंक है उसमें कमेंट बॉक्स का आइकन व्हाट्सएप वाला है या मतलब डायरेक्टली कमेंट? दोनों है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक मैसेंजर दोनों है उसमें। उससे आते हैं क्वेश्चंस, तो मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपको 1-2 क्वेश्चन भेजे थे। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि इस बार मैं एक बार अनाउंस भी कर दूंगा। अनाउंस कर देना। उसमें क्या रहेगा, जैसे फेसबुक में आप बोला कमेंट सेक्शन, यूट्यूब का कमेंट बॉक्स और जो डायरेक्ट लिंक है उस पर व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर दोनों के आइकन है। तो जहां पर भी पोस्ट करें वी विल गेट दैट एंड आई विल सेंड यू। फाइन। Dr. Ashutosh, we have posted on Facebook also. There is one request, maybe you can start 3-4 minutes earlier if you want, or maybe at 4 only. So the request, hello? Yes, I can hear you. So the request is actually several doctors are
a bit confused that every time we are coming with the same topic, however, speakers are different. So maybe you can just elaborate in couple of lines that although the theme is same, but we intend to incorporate their clinical experiences as well. Like for example, we had Dr. Tomar yesterday. We have today Dr. Preeti. So we are trying to get senior doctors and their experiences also with the immunity pre, during and post COVID management and all these aspects. So maybe you Yes, can yes, just elaborate that we will have forthcoming sessions also every Saturday and Sunday. But the topic maybe sounds similar to you, but the like every session will have a different we can say maybe information set of information depending upon the speaker and their experience also. So maybe you can just emphasize on that point so that people will get interested in joining again and again to our sessions. fine, fine. So we just any initial 2-3 minutes, I will just dwell upon that as well. Right, and we are we have posted on Facebook also. We are right now live on YouTube, and our website link has also been activated. So and it's Yes, around 3:51 right now. So accordingly, maybe next 7-8 minutes you can start. fine. So we will just start a little bit early since you have told me to elaborate on that particular point, so we can discuss a little bit about that. Yes, so maybe around 3:55, 3:56 you can start, and accordingly you Yeah, can take it yeah, forward. yeah, yeah, yeah. Right, sir. Thank you. Uh, Dr. Preeti, can you hear me? I'm audible. Ma'am, you have to unmute yourself. You are on mute. Yeah, Ashutosh? yeah. So, ma'am, I will be opening the session, giving a brief introduction about what the series we are doing right now, and then I will just hand over the session to you. Okay. So we'll be starting in next couple of minutes, maybe about in next 4 minutes from now. That's fine with you? Yes, yes, sir, that's Yeah. Right. All the best, Dr. Preeti. I'm Dr. Rajat. I am from Dr. Ashutosh's team. So Dr. Ashutosh would be handling this session. So all the best, Dr. Ashutosh and Dr. Preeti. Thank you, sir. Thank you very much. Dr. Preeti, your voice is a little bit on a lower side. If you can just check your microphone or maybe headphone. Is it okay? We can't hear you. Just wait, I'll change the headphones. Okay.
Dr. Piyush, are we live? Yes, sir. Yes, we can start. So can we start on the, I suppose, on the Facebook and everything? Yes, everywhere we are live. Fine. So good afternoon, everyone. Mankind Pharma welcomes you all to the live webinar on role of immunity during pandemic and beyond, Elixirs from Ayurveda. So what started as a pneumonia of unknown origin in Wuhan has spread to every nook and corner of the world. COVID-19 has not remained as a pandemic of West anymore. India is going to be worst hit in the world. We have 75 lakh confirmed cases till date, and each passing day we add approximately 60 to 70,000 patients in this group. The only respite being a total case fatality rate of 2% and a recovery rate of 81%. The coronavirus crisis has reminded people of necessity of staying healthy. A special emphasis has been on the building immunity, reinfection, and slow recovery in the COVID-19 patient entails the need of a better immunity in all. Across the world, people are gravitating towards proactive and preventive healthcare, driving the demand for food supplements and immunity boosters. Ministry of Health and Family Welfare has acknowledged the role of Ayurveda not only in the prevention of COVID-19, but also in the successful management of mild COVID cases. Ayurveda is a colossal science, and our approach is not limited to work as a deterrent against SARS coronavirus, but also deal in a holistic manner against the pandemic. This pandemic has huge disruptions in everyone's life, causing stress, anxiety, depression, and sleep disturbance, to name a few. So, Panchkarma medicines and immunity boosting can go a long way in managing all these disruptions. We have been doing a series of webinars with a lot of doctors on the same topic, as you will agree, that immunity and its role is phenomenal in the present circumstances. We started our talk or this particular sessions with Dr. Prashant Tripathi, then Dr. Jaishankar Mond, Dr. Harendra Mohan Shukla, Professor Dr. Arun Gupta from Chaudhary Vam Prakash College, and the last session was done by Professor Dr. J.S. Tomar. And today we have Dr. Preeti with us. She will be sharing her clinical experiences in this particular topic. And we intend to do series of such events in the future as well. In next week, we will be enrolling Professor Yamini Bhushan Tripathi from BHU, followed by Dr. Abhay Tripathi. So the idea is to give each session a new phase, is to have their clinical experiences in this particular segment. As you all know that there is no specific treatment for coronavirus, and we are just repurposing our drugs. We are just trying to find new solutions. Whereas in Ayurveda, there are specific, say, herbs, medicines, and there are certain regimes in Panchkarma which can be definitely tried in this particular scenario, and which have helped a lot of patients or in general public. Recently, I got to know from Dr. Tomar that Delhi government has distributed around about 80,000 packets to Delhi police personnel, and we all are very proud to say that none of them contracted COVID during this entire lockdown period also. And there is no fatality in All India Institute of Ayurveda. So going ahead, let me introduce Dr. Preeti Chhabra. She is a senior Ayurveda consultant in Sir Gangaram Hospital, New Delhi. She is the executive member of World Academy of Spiritual Science, patron of Nasya Arogyalaya, advisor of Namo Gange Trust. She has been actively promoting Panchkarma, and her efforts are acknowledged by both government and private organizations. Dr. Preeti is regularly participating on talk shows on Doordarshan, Total TV, CNN, IBN, Pragya, Focus TV, and Care World. We welcome Dr. Preeti in this webinar and request her to commence the session. I request all the attendees to post their questions, suggestions in the comment box. We are right now live on Facebook, on YouTube, and on Internet Vedyas. So I request all the attendees, they can post their questions in the comment box on the messenger. They will reach to us and we will try to answer all of them once the talk is over. So now I hand over the session to Dr. Preeti. Ma'am, you are welcome. Thank you very much, Dr. Ashutosh, and thank you, Mankind, for giving me this opportunity
to share my views from this esteemed platform. We have been talking about COVID since more than 6 months now, and I would like to add on whatever little I know and whatever little I have experienced from this platform. We all know this is a very new clinical entity, and the scientist team of doctors have been struggling day and night to handcuff and tame this problem. But many times we see they are not as successful as they should have been. The mystery still is lies unfolded, and the most practicable model is Ayurveda model of healthcare, which has been adopted in by most of us here in India, and we have been able to successfully at least prevent the disease or help the patients to recover in the primary phases. So today the topic of the talk is role of immunity during pandemic and beyond, the elixirs from Ayurveda. Immunity in Ayurveda, we all know, has been defined as the Vyadhikshamatu, and which is dependent on Oj. Oj has been defined as the ultimate elixir of all the dhatus, all the ras, rakt, mas, med, asthi, mija, shukra, they terminate into the end product, which is Oj, which is the Vyadhi bal of the person, and which is the ultimate, dharan dravya of the body. Sushruta has very rightly mentioned in Sutrasthan Adhyay 15 that Tatra Rasadinam Shukrantanam Dhatunam Yat Par Tejas Tat Khalu Ojas Tade Balam Uchyate. Oj hi bal hai, and this is the ultimate end product of all the dhatus. यह समस्त धातुओं का उत्कृष्ट उत्पाद है और यही प्राणियों की जीव शक्ति और व्याधि क्षमत्व है. Similarly, Acharya Charak also mentions in Sutrasthan 17 that Prakristu balam shreshma vikrito mal uchyate. जो प्राकृत कफ है वो ही बल है और वही जो है शरीर को धारण करने में सक्षम है, ओज है, और जो विकृत कफ है वो मल और रोग का कारण है. सच एव ओजस्मृता काया सच पापमो उपदिश्यते. And now when we classify oj, तीन तरह का बल हमें देखने को मिलता है. आचार्य ने बताया है सहज, कालज और युक्तिकृत. सहज इज द इननेट, प्राकृत और वंशानुगत. जैसे एक परिवार का एक आयुष्य होता है, एक आयुष्य प्रमाण होता है, उसमें एक पर्टिकुलर एज में हर प्राणी का जो है एक काल होता है, लॉन्गेविटी होती है, तो वो बल निर्धारित करता है जो कि सहज है, माता पिता द्वारा दिया गया वंशानुगत बल है. सेकेंड बल इज क्लासिफाइड एज अ कालज बल, जो ऋतु और व्यय की अपेक्षा रखता है और ऋतु और व्यय के अनुसार उस कालज बल का निर्धारण होता है. एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज युक्तिकृत. दिस इज वॉट वी शुड बी वर्किंग अपॉन, एंड यही हमारे परिप्रेक्ष्य में है. इसी को ही हम एनहांस कर सकते हैं अपनी युक्ति के द्वारा. व्हाट इज युक्ति? युक्तिस्तु योजना या तो युज्यते. जो योजना की जाती है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, दैट इज युक्ति. तो जो ये युक्तिकृत बल है, ये तीन चीजों पे डिपेंडेंट होता है: आहार, औषध और संशोधन चिकित्सा. जो ऊर्जस्कर और रसायन आहार है, तो वो जो है युक्तिकृत बल को हम एनहांस कर सकते हैं उचित आहार विहार के द्वारा. सेकंड इज औषध. तो रसायन और बाजीकरण जितनी औषधियां हैं उनका सेवन करके हम ओज को एनहांस कर सकते हैं. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द संशोधन चिकित्सा और द पंचकर्म चिकित्सा, जिसको हम बायो डिटॉक्सिफिकेशन या फिर हम उसको संशोधन चिकित्सा, शुद्धिकरण चिकित्सा कहते हैं. बिकॉज बिना शुद्धिकरण के रसायन और बाजीकरण भी इतने इफेक्टिव नहीं होते. तो इस तरह से आहार, औषध और संशोधन चिकित्सा द्वारा हम युक्तिकृत बल को एनहांस कर सकते हैं, ओज की वृद्धि कर सकते हैं. अब यह है व्याधि प्रतिनिकता या व्याधि क्षमत्व क्या है. इसके बारे में चरक सूत्रस्थान 28 पे चक्रपाणी जी टिप्पणी करते हैं. मूल स्रोत है न च सर्वाणी शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति. दैट मीन्स सभी शरीरों में व्याधि क्षमत्व एक जैसा नहीं होता, समर्थता एक जैसी नहीं होती. हमारे यहाँ बहुत एक टिपिकल, बहुत
यूनिक सिद्धांत है आयुर्वेद में कि पुरुषम पुरुषम वीक्ष्यम परीक्षित, हर पुरुष अपने आप में बहुत यूनिक है और उसको हमें उसी तरह से परीक्षा करके औषध का और बाकी सब जो भी दिनचर्या ऋतुचर्या का हमें निर्धारण करना है। तो यहाँ पे ये भी उसी को ही आगे ले जाते हुए नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए आचार्यों ने बताया कि न च सर्वाणी शरीराणी व्याधि क्षमत्वे समर्थानी भवन्ति। और इसको एक्सप्लेन करते हुए चक्रपाणी जी कहते हैं कि व्याधि क्षमत्व दो तरह का है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं। व्याधि बल विरोधत्वम, that means factors that act against the disease force, and व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकम इति यावत। तो व्याधि उत्पाद प्रतिबंधक के सेकंड कंपोनेंट है, which means the factors that oppose the genesis of the disease. First is the factors that act against the disease force, and the second component is the factors that oppose the genesis of the disease. So it is very important to understand this classification so that we can act upon the Vyadhi Kshamatva and have, focus on developing the Vyadhi Kshamat in accordance to these two principles. Now, what is the importance? इसका लाभ क्या है? व्याधि क्षमत्व बल को एनहांस करने का लाभ क्या है और उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? तो the first attribute is स्थिर उपचित मानसता, that means strong and well formed musculature. सर्व चेष्टा स्वप्रतिघात, that means it ensures that there is proper functioning of all the motor activities. स्वर्ण वर्ण प्रसादो, clarity of voice and वर्ण प्रसादन, that means the complexion is radiant. Indriyon ki pravritti, that means proper functioning of all the sensory and motor functions, including the psychic functions also. Psychic functions is जो हम अतीन्द्रिय, जो उभयात्मक मन है, 11 इंद्रियां हम पढ़ते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक उभयात्मक मन। तो जो उभयात्मक मन है वो साइकिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इंद्रियों की प्रवृत्ति। Now, why immunity is a necessity? As we see in, it is so important. This is just data we had, as on 17th October 2020, India has 18.77% of the total COVID cases worldwide. It is just next to a very short margin next to US, and on the third level stands Brazil. So having these many number of cases, and that too we have observed that the recovery rate in India per se is quite high, probably because of the use of so many condiments and spices and so many the intervention of Ministry of Ayush for distribution of kadas and many other things. Although the cases are quite large in number, despite that the recovery rate is much better than the other countries of the world. So it is very necessary to build up the immunity. And we observe the presentation and risk factors of COVID-19. The most common symptoms are fever, dry cough, and fatigue, amounting to 88%, 69%, and 38% respectively. There are many uncommon symptoms as well listed here. But who are at the risk of severe illness? It has been observed that people aged over 65 years above and at the age of 65 years are more at risk. People who live in a nursing home or long-term care facility. Other high-risk conditions include comorbidities, people with chronic lung disease or moderate to severe asthma, people with heart diseases and complications, uncontrolled diabetes, immunocompromised like HIV or prolonged use of corticosteroids. So these patients are more vulnerable to, get caught into the disease. Around 10% of the patients who have tested positive for SARS-CoV-2 virus remain unwell beyond 3 weeks, and a smaller proportion for months. Only 65% of people had returned to their previous level of health 14 to 21 days after a positive test in USA. Post-acute COVID-19 as extending beyond 3 weeks from the onset of first symptoms, and chronic COVID-19 as extending beyond 12 weeks. And the patients who do not return normal even after 12 weeks of disease, they are, because of these reasons, there is persistent viremia, there might be relapse, there might be reinfection, inflammatory or other immune reactions might be there. And the most important is post-traumatic stress, PTS.
So these patients usually do not recover to normalcy even after 12 weeks of the exposure to the disease. So long-term COVID-19 can cause many other associated symptoms. There might be fatigue, headaches, insomnia, chest pain, vertigo, skin rashes, and joint pain. Apart from this, depression, anxiety, and PTS also complement these physical symptoms. Now, what is the possibility of reoccurrence? We observe the reoccurrence of SARS-CoV-2 infection with a more severe case after mild COVID-19, and there is reversion of RT-qPCR for positive and late antibody response. This is a case report in the Journal of Infection elsewhere, and we observe that there is clinical reoccurrence of the symptoms after recovery, and there is viral relapse, reinfection, or inflammatory rebound. In a follow-up data of 1146 COVID-19 recovered patients in Italy, nearly 10% of the recovered patients tested positive at RT-PCR nasopharyngeal swab. Most of the patients were asymptomatic at the time of reoccurrence, while few complained of fatigue and respiratory difficulty. Now, Ayurveda interventions during COVID-19 pandemic, we have 4 categories. The unexposed asymptomatic group, we had common health keeping approaches like healthy diet, healthy lifestyle, adequate sleep, physical activity, and good conduct. I would emphasize that good conduct is very, very important. As our acharyas have told that the Sarvottam Rasayan is Achar Rasayan. It is what is your conduct, what is your behavior, and the best code of conduct. If you are, was a study where it was analyzed that people who speak truth, all truthful people have a high level of immune status, because this has been re-emphasized by the fact that Acharya Charak has mentioned that Sarvottam Rasayan is Achar Rasayan. It is your good conduct, it is your good behavior which determines your innate immunity, and it is also one of the Yuktikrit immunity, component of Yuktikrit immunity. Apart from this, administration of Chyavanprash, Brahma Rasayan, Amrit Bhallatak, Sanjeevani Vati, and Swarna Prashan have also played a great role. Not only Swarna Prashan, I have observed that people who were suggested to have Swarna Siddha Jal or Swarna Siddha Dugdh per se during these COVID times, because I have advised more than hundreds of patients about this, and they have been practicing. We have observed that the immune status and the chances of acquiring this infection were quite low in such patients. And for patients with mild COVID-19 symptoms, we have been recommending Pipri Rasayan, Goje Vadikwat, Kantakari Avle, Chitrakadi Vati, Vyagri Haritki, Dashmul Kwat, Sitoplati Churn, Talishadi Churn, and Yeshti Madhu Churn, according to the condition of the patient, according to the age of the patient, according to the Anchanch Kalpana, and according to the Srotas Parikshan. Because it is one shoe doesn't fit all here in Ayurveda. We have to examine at the micro level and plan the management protocol according to the status of the prevailing status of the patient and other parameters as well. Now, for exposed asymptomatic and quarantine patients, these medicines were administered. They include Sanjeevani Vati, Chitrakadi Vati, decoction of combination of herbs like Guruchi, Zingiber officinale, that is Shunti, Curcuma longa, that is Haldi, Ocimum sanctum, that is Tulsi, Glycyrrhiza glabra, Athoda vesica, Andrographis paniculata, Moringa oleifera, Trifla, and Trichottu. With moderate to severe COVID-19 patients, these require tertiary care from the beginning itself. So we had co-prescribed Lagum Valini Vasant, Sanjeevani Vati, Tribhuvan Kirti Ras, Pritva Chintamani Ras, Mrityunjay Ras, and Siddha Makardaj Ras, according to the, again, condition of the prevailing condition of the patient. Now, Ayurveda daily practices for prevention of COVID-19 have also played a great role. We know the first thing was isolation, and second thing was social distancing, and third was the use of medication. So these practices which have been listed in our Dincharya, the
they were of great help in preventing and promoting the disease status, the health status of the patients. Hastapat Dhawan, we all know washing of hands and legs when we come from outside or any guest comes. So we need to ensure that the extremities are clean. This avoids the spread of infection which one gets from the outside environment. Then Aushadhyut Jal Snan, bathing by using medicated water by adding leaves of neem, ajwain or karpoor and even pudina. So these help to disinfect the body, and the water soluble extracts of these herbs, they are similar to the use of soap, and they create a coating over the skin surface, preventing the attack of the virus. Then Abhyang, we all know Abhyang has been mentioned that Abhyangam Achret Nityam. And we all know the outer two layers of the COVID virus are made of lipids. So I presume that when we abhyang, gharshan is there, so the outer layer might get disintegrated in the process in the presence of a lipid layer on the skin, and the virus could have been rendered denatured or because of the exposure of the RNA. So Abhyangam not only strengthens the skin by increasing the blood flow, the sweating caused during massage helps to remove the toxins from the blood also. Then another most important is the Kaval and Gandush Dharan. These are rinses and gargles by medicated kashay or medicated oil. They have the cleansing effect on the oral cavity as well as remove extra mucus. And this coronavirus are abundant in the nasal and the oral mucosa. So it might have the potential to remove them from the local area and reduce the severity of the disease. Then Nasya or medicated nasal drops, again very, very important. They disinfect the local area of the nose as well as reach the bloodstream and helping them to decrease the respiratory infections. We have, a list of different Nasya kalas mentioned by the acharyas, and Pratimarsh Nasya is very convenient to have, which should be administered almost daily to every patient and the healthy subjects to prevent the infections, viral infections. Then Trivit Kukshi Ahar, leaving 1/4 part of the stomach empty for digestion. It improves metabolism and thereby nutrition of the body, and thus increases the immunity, which is an important factor for the prevention of COVID-19. Now we have a series of pandemic diseases which have been plaguing the mankind from 18th century till date, starting from the cholera pandemic in 1817 to the present COVID-19 virus of 2019. What is most important here is that we have seen that there is a loss of human lives throughout, but there is one theory which stands tall and which says survival of the fittest, and that too on the basis of principles of Ayurveda. Principles of Ayurveda, the first principle is prevention of disease, swasthasya swasthya rakshanam, which is the unique concept in this medical science, in this heritage, ancient Indian medical science, which is not there in any science of the world, any medical science of the world. So prevention of disease is ensured by increasing the immunity and is the first priority. Second priority is given to the treatment of the disease, that is aturasya vikar prashamana. So prevention of the disease, we all know prevention is better than cure. So prevention is of prime importance in handcuffing this pandemic. Now there's another concept of Janpada Dvans in Charak Viman Adhyay 3, where the pryay or the synonyms are Marak, Janmar and Mahamari. यहाँ पे क्या होता है कि रोग उत्पन्न होते हैं और जनपद का विनाश कर जाते हैं. तो जनपद में सामान्य रूप से रहने वाले भाव जो अधिकाधिक प्रभावी होते हैं वो हैं वायु, जल, देश और काल. अगर हम कोविड का विश्लेषण करें तो यहाँ पे काल की विकृति मानी जाएगी. और यहाँ पे चिकित्सा सिद्धांत देते हुए चरक विमान 3 में आचार्य चरक कहते हैं कि एशाम न मृत्यु सामान्यम सामान्यम न च करुणा. यहाँ पे मृत्यु सामान्य नहीं होती और कर्म भी सामान्य नहीं होते. और इसकी चिकित्सा में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि कर्म पंचविधम तेषाम भेषजम परमुच्यते. पंचविध कर्म यानी कि संशोधन कर्म, पंचकर्म चिकित्सा और भेषज
यही इसका परम उपाय है। रसायनानां विधिवत चायोपयोगः प्रशस्यते, और रसायन योगों का विधिवत प्रयोग यही प्रशस्त्र है। और जो नित्य अभ्यास्यमान रसायन है, जैसे कि आमल की प्रयोग, हरिति की प्रयोग, त्रिफला प्रयोग या सर्वोत्तम आचार रसायन बताया है, इनका विधिवत उपयोग ही करना प्रशस्त है। अब यहाँ पर हम मानस भावों को भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस दौरान जितना ज्ञान विस्तार और जितना ज्ञान गंगा बही है और जितने लोगों ने इस ज्ञान गंगा का लाभ लिया है और आत्मोन्नति की है, वे लोग इस चीजों से बचते चले गए और अपने आप को काल का संशोधन जो है वो इस दौरान जो हुआ है, उसी से हम लोग जितने भी अनअफेक्टेड लोग हैं, उसी के कारण ही हम बचते चले गए। अब रसायन एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है आयुर्वेद में, जो कि और किसी भी मेडिकल साइंस में मैं बताना चाहूंगी कि नहीं बताया गया है। तो रसायन की डेफिनेशन चरक चिकित्सा 1 में ही उन्होंने बताया ही है कि लाभोपाय ही शस्त्राणाम रसादीनाम रसायन, जिन औषध द्रव्यों के प्रयोग द्वारा श्रेष्ठ रस, रक्त और अन्य धातुओं की प्राप्ति होती है, उसे रसायन कहते हैं। This is a medicinal therapy which produces the best quality of dhatus, and it is the ultimate rasayan. It has the ultimate rasayan प्रभाव। और चरक चिकित्सा 1 में ही इसको रीडिफाइन किया है कि क्या क्या लाभ हैं रसायन के। उनमें बताया है आचार्य ने कि दीर्घमायु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया प्रभा वर्ण स्वर्णोदर्यम देहेन्द्रिय बलम परम वाक् सिद्धिम प्रणीतम कांति लभ्यते न रसायनात् लाभोपाय शस्त्राणाम रसादीनाम रसायनम। यहाँ पे हर कंपोनेंट को, जो हमारा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग के कंपोनेंट्स हैं और देह इंद्रिय को परम बल प्रदान करने वाले जो औषध द्रव्य हैं या जो चेष्टाएं हैं या फिर जो एक मेथोडोलॉजी है, उसको रसायन कहा है। और इसी रसायन सेवन के द्वारा जो हमारी धारणा धात्वा, जो एक कंसेप्ट बताया है, जो धारण करने वाली धातुएं हैं हमारे शरीर की, वो उत्तम स्थिति को प्राप्त होती हैं। और जब धातुएं उत्तम स्थिति को प्राप्त होंगी तो कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी इन्वेजन उनको प्रभावित करने में सक्षम नहीं हो। Now, the primary concern of all the medicos is prevention and control of the disease. A novel alternative to antimicrobials is immunomodulation. Immunomodulation का हमने क्या महत्व है इस पेंडेमिक के दौरान हमें जाना है। और इम्यून रिस्पॉन्स के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, इधर इट डिस्ट्रॉयज द infectious invaders और it raises the innate, natural, adaptive and learned immunity. तो जो हर्बल इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं बिकॉज इनके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं। तो हम 2 आर्म्स देखते हैं इम्यूनिटी के। एक तो इननेट इम्यूनिटी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट, ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, बेसियोफिल्स हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, उसमें बी और टी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज, हेल्पर, साइटोलिटिक और सप्रेसर सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर का जो डेफिनेशन है वो अग्रवाल एंड सिंह ने 1999 में कॉइन की, जिसमें बताया गया कि इट मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस, बायोलॉजिकल और सिंथेटिक, which can stimulate, suppress or modulate any of the components of the immune system, including both innate and adaptive arms of the immune response। जो हमने देखा कि innate में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं and adaptive arm में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो वो सारी चीजें जो कि दे माइट बी बायोलॉजिकल, नेचुरल, सिंथेटिक, जो भी चीजें हैं, जो भी द्रव्य हैं जो स्टिमुलेट करते हैं या मॉड्यूलेट करते हैं इम्यून सिस्टम को, या जहां जरूरत है सप्रेस करते हैं इम्यून सिस्टम को, उनको हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जान सकते हैं। अब इम्यूनोमॉड्यूलेशन का क्या ऑब्जेक्टिव, क्या एम है? It aims to induce the effective and sustained immune response against infections. It speeds up the maturation of non-specific and specific immunity during neonatal period and in young children. It is used to enhance the local immunity and to overcome the immunosuppressive effects of stress and environmental pollution. And also it is important to maintain immune surveillance. Now, what are the advantages of immunomodulators over antimicrobials? They overcome the emergence of resistance since they do not act on microbes directly.
It is treatment option for immunocompromised patients, broad spectrum of activity against viral and fungal as well as bacterial diseases, and we provide non-specific emergency treatment options in the event of emergence of novel pathogen or a biowarfare attack. अगर हम SARS-CoV-2 और immune system को हम उस पे impact देखें, तो जो there is increase in the amount of angiotensin 2 leading to respiratory distress in case of SARS-CoV-2 infection. T cells, particularly CD4 plus and CD8 plus, play an antiviral role to combat the pathogen and elevate the risk of developing autoimmunity and inflammation. CD4 plus T cells advance production of viral specific antibodies by activating T cell dependent beta cells. T helper cells make pro-inflammatory cytokinins via NF-kB signaling, and interleukin 17 cytokines show inflammation and activates downstream cascades of cytokines and chemokines IL-1, IL-6, IL-8, TNF-beta, and MCP-1. And the neuroinvasion of COVID virus, it invades the CNS to induce neurological disease. Virus entry and destroy medullary neurons. Apart from the respiratory suppression of COVID-19, patients show headache, nausea, vomiting, cognitive difficulty, and brain fogging. We can see here in this diagram that there is entry of human coronavirus in CNS through the olfactory bulb upon nasal infection, which causes inflammation and demyelination. Further, it reaches and crosses the blood-brain barrier in within a week and produces all sorts of symptoms. Now there are, this is a list of Ayush recommended medicinal plant extracts for treating COVID-19, whereas Guduchi is given the prime position along with the Nivalambu Kudinir, then aqueous extract of Bihidana and Unab as a Unani medicine, arsenic album 13 homeopathy. And we see symptomatic management of COVID-19 by Ayush 64, Agatse Haritiki, Anu Telam, Athoda Vesica, and the list is long. Now, mankind has come up with the immune health, which has all the potent rasayan dravyas we can observe: Ashwagandha, Giloy, Kalmi, Yashti Madhu, Tulsi, and Amla. These are all well-established rasayan dravyas. Most of them we having Pitta Kashaya, and we see that approximately 4 out of 6 are Ushnavirya dravyas. They are basically Deepan Pachan because they act at the level of Ras Dhatu and help in promoting the proper formation of the Ras Dhatu so that the Uttarotter Dhatu Nirman is up to the optimum status. And we'll see one by one what are the properties and actions. Like first drug Ashwagandha, it is Tikht Kashaya Ras, Laghu Guna, Ushna Virya, and Madhur Vibhag. It is a potent rasayan, Vat Kafar Dravya, Balle and Vajikaran. It is used as Shothagn in Kashaya and Durbal subjects in Vatrog and Klevya. The root of Ashwagandha is used, and traditionally it has immunomodulatory properties. We have observed and researchers have proved that peripheral blood mononuclear cell from 38 HIV patients who were exposed to Withenia somnifera root extract at standard concentration, they had a good response, and there was an overall decline in the percentage of 38 CD expressing CD8 plus T lymphocytes in such subjects. And there has been observed that there was an enhancement in the phagocytic activity of peritoneal macrophages in these subjects as compared to the control in mice. The animal experiments were done. As immunity plays an important role in pathogenesis and treatment of tuberculosis, so the role of Withenia somnifera as an adjuvant has been studied on selected parameters. At the end of 8 weeks, sputum conversion was seen in 86.6% patients in study group and 76.6% subjects in placebo group. And at the end of 12 weeks, it was observed that a highly significant increase was there in both CD4 and CD8 cell counts in the study group.
Chronic stress has been found to be associated with higher than normal levels of serum CRP, which is a systemic marker of inflammation that is associated with increased risk of a host of chronic diseases. And ashwagandha administration in the dose of 250 milligram BD decreases the CRP concentration, indicating the decline in the systemic inflammation. So it has been observed that there was a very positive role of ashwagandha on symptoms and immunological parameters in pulmonary tuberculosis, which gives us confidence to use this drug extensively. And in context of COVID-19 management, we would say that it has antibacterial and immune-enhancing properties. It prevents pyrexia. It has anti-inflammatory effect. It helps in maintaining the vascular integrity and conservation of the alveolar space. Vithanon from Withenia somnifera may inhibit the novel coronavirus entry by disrupting interactions between the viral S protein receptor binding domain and the host ACE2 receptors. Now, targeting COVID-19 main protease through active phytochemicals of Ayurvedic medicinal plant Withenia somnifera, Tinospora cardifolia, and Ocimum sanctum, there was a molecular docking study which showed that active phytoconstituents of these three were predicted to significantly hinder main protease M-Pro or 3CI-Pro of SARS-CoV-2. Through molecular docking and molecular dynamic stimulation study with thanoside V, somniferin, tinocorticide, vicinine, ursolic acid, and isorentin 4, O-glucoside 2, OP-hydroxybenzogate were anticipated to impede the activity of SARS-CoV-2 M-Pro. Now, the second drug is Tinospora cordifolia, very commonly known as Guduchi or Amrita. The English name is heartleaf moonseed. This showed an increased phagocytic activity without any effects to the cell-mediated or humoral immune system. Tinospora cardifolia possesses dual effect in lymphoma, where it upregulates the phagocytosis and antigen-presenting ability in the secretion of anti-tumor factors, IL-1, TNF-alpha, and RNI, as well as it has the ability to induce cytotoxicity and cytostasis of tumor cells. I would like to add on a practical experience with Tinospora cardifolia here. Plain Guduchi Ghanvati, in the initial stages of infection with mild fever and to the family of the affected patient, was administered as a loading dose. And it was observed that on the second day onwards, there was a decline in the pattern of fever. There was no upsurge. The spikes were reduced, and the attendance of the patient, the family which was having patients in isolation, they were protected from contracting the disease. So that is the potential of this, and it was very well and widely circulated by the ministry also. Most of the families and many vigilant members of the society, they started having Guduchi and Ashwagandha on their own accord right from day one when this advisory was issued. Sorry. And it was observed that this disease became self-limiting in such families where this was practiced regularly. Until date, also many patients have been continuing taking it as a part of daily ritual or as a part of dincharya to prevent themselves from this viral infection. In allergic rhinitis patients, Guduchi extract increase the total leukocyte count and decrease in neutrophil and eosinophil count. Likewise, the absence of goblet cells was also observed, and nasal mucosa was changed from bluish to pink color in 69% patients. Moreover, Tinospora cardifolia reduced all symptoms of allergic rhinitis significantly. So all these researches reinforce our faith into the system, and we have been observing clinically also in our patients. So these researches give us a strength and confidence in
using these medicines for new variety of diseases which have not been mentioned and which have not been experienced in the past. And moreover, Tinospora cardifolia as an adjuvant therapy gave remarkably improved progress in healing wounds in diabetic patients having foot ulcers, and besides a substantial reduction in debridement and enhanced phagocytosis. Again, this helps us to choose this drug in patients having comorbidities such as diabetes. In fact, it has the potential to reduce the and increase phagocytosis. It might help us to reverse the disease process as well, or arrest the disease process as well. The anti-allergic and bronchodilator properties of an aqueous extract of Tinospora cardifolia evaluated on histamine-induced bronchospasm in guinea pigs, capillary permeability in mice, and mast cell disruption in the rats showed that it significantly decreased bronchospasm induced by 5% histamine aerosol, decreased capillary permeability, and reduced the number of disrupted mast cells. Tinospora cardifolia extract TEC treatment caused significant reduction in eosinophil count and improved hemoglobin in HIV patients. Again, a very, very encouraging study which helps us to gain confidence in using this particular medicinal plant. Then Kalmig or Endographis paniculata, it is Tiktharas, Laghu Ruksh, Tikshn Gun, Ushn Virya, Katu Vipak. It is Deepan, Jwaragn, Krimign, Kasagna, and Pachan. So all these Deepan Pachan drugs work at the level of Rasagni, and they help to improvise the status of Uttarotter Dhatus and their optimum level production. It is indicated in Ajeen, Arsh, Atisar, Jwar, Kandu, Kamla, Pravahika, Yakrit Vikar, and Pramehe. Now, there are few evidences, research-based evidences, which show that it is very effective in common cold and acute respiratory tract infections. A placebo-controlled double-blind clinical trial assessed the efficacy of a standardized extract of the aerial parts containing 4% andrographolids for treatment of the common cold in 61 adult subjects. A significant reduction in clinical symptoms such as sore throat, tiredness, muscular ache, and malaise was observed on day 4. And in acute respiratory tract infection, a systemic review of 33 RCTs found that A. paniculata improved cough and sore throat when compared with the placebo. It alone or plus as a usual care had a statistically significant effect in improving overall symptoms of ARTIs when compared to placebo, usual care, or other herbal therapies. Evidence also suggested that A. paniculata alone or plus usual care, the standardized protocol which was being followed, shortened the duration of cough, sore throat, and sick leave time to resolution when compared versus usual care. Now, coming on to the immunostimulant and immunomodulator activity of Kalmeg, antiviral and immunostimulant in a clinical trial on HIV positive patients, this was administered, and which significantly improved the CD plus lymphocyte count from the baseline mean of 405 cells per cubic mm to 501 cells per cubic mm. Around 10% patients of tuberculosis die even being treated with rifampicin. In 70 cases of tubercular meningitis, which were treated with A. paniculata and rifampicin, 30% of patients were cured with fatality rate of only 8.6%. A combination of A. paniculata plus rifampicin resulted in a 2.64 decrease in the fatality rates. And moreover, the actives from A. paniculata, andrographoloid, neoandrographoloid, are reported to be virucidal against herpes simplex virus 1 without having any significant cytotoxicity at the virucidal concentrations. Aqueous extract of A. paniculata shows significant increase in cellular immunological indicators such as RBC, WBC, and thrombocytes at low concentrations in the in vivo studies. A. paniculata was able to modulate the innate immune response by regulating both classical and alternative activation of macrophages and regulate specific antibody production as well as antigen-specific IL-4 producing splenocytes.
Now, Tulsi, it is a common household name, and it is been the first drug of choice, the first home remedy for any respiratory ailment in India per se, as a cultural or the treatment or the home remedy. It is Katutik in Ras with Lagu Ruksh Tikshn Gunas and Katu Vipak. Its Veere is Ushan, and it very well balances the Vat and Kaph by increasing the Pith dosha simultaneously. The parts used are leaf, root, and seeds. Usually, the fresh leaves are used, seed powder is also used. Now, coming as per the Dhanvantri Nighantu, Kadev Nighantu, Bhavprakash Nighantu, and Raj Nighantu, it is Vat Kaf Jit. It specifies Vat and Kaf dosha, and hence is used in Vat and Kaf disorders. It has Krimihar and antiviral prabhav, as it is a very potent antimicrobial. It has Vishagn Prabhav, that is, it is antitoxic. It is Ruchi and Agni Deepan, it improves the taste and the digestive power. It acts also as a cardiac tonic. It is the best one in bronchitis and asthma. It is useful in hiccups and Parsh Ruk, or the pain on the lateral side of the chest. It is also called as Kushtajit, as it is indicated in skin disorders, in Mutraprich or in dysuria also it is used. And Drikro, it is advocated in eye disorders, and Bhuthar, that is mental disorders. But the only thing is that it enhances the pitta dosha and induces burning sensation at times. It is a potent antioxidant, as it has a significant ability to scavenge highly reactive free radicals. The phenolic compounds, the cercilinol, cercimartin, isothamacin, and they have appreciable quantities of eugenol, which is a major component of the volatile oil from the Ocimum sanctum extract of fresh leaves and stems, which possess the good antioxidant activity. Sorry. It is adaptogenic activity and anti-stress activity. As an adaptogenic agent, it helps the body to adapt more efficiently to stress. Tulsi is one of the most effective adaptogen known to the mankind. The immunostimulant capacity of Ocimum sanctum may be responsible for the adaptogenic action of the plant. The alcoholic extract of OS whole plant increased the physical endurance, the survival time of swimming mice, prevented stress-induced ulcers and milk-induced leukocytosis, respectively in rats and mice, indicating induction of non-specifically increased resistance against a variety of stress-induced biological changes by OS in animals. The bronchodilator and antitussive activity of Ocimum sanctum showed that significant smooth muscles are relaxed in mild to moderate patients of bronchial asthma in single-blind crossover study. Ocimum sanctum ethanolic extract showed marked protection against the mast cell degranulation following antigen challenge in sensitized animals. Ocimum sanctum brings about its antitussive effect by central action, probably mediated by both opioid system and GABAergic system. Now comes the wonder medicine again, the Yashti Madhu or Glycyrrhiza glabra. The simple medicine has loads of benefits on various systems of the body. It is Swar, it is Jeevanium, it is Vaisthapan, it is Kanthe, a good Rasayan, Chardi Nigrahan, Shukravardhak, Chakshushe, Varne, Sandhaniye, Ruchikarak, Snehopag, Medde, very important. Pittahar, because this Medde property has helped to take care of the stress and post-traumatic stress disorders. I have been advocating Yashti Madhu to be chewed daily at least 2 to 3 times as a Kafagna Dravya also to clear the respiratory passages, and at the same time to improve the medha and help to combat the post-traumatic stress disorder. It is a very good pitta. Patients who are complaining of repeated acidity due to anxiety in these COVID times, it has worked wonders for my patients. It is Balle, it is Asthapanopag, Rakta Prasadhan, Vathar, Keshe, Vamnopag, Dahashaman,
Mutu Virajaniya, Angamard Prashman, and Shonit Sapan. So you can see the spectrum of effects it has on the body system. So it is very, very effective and potent drug, and it has Rasayan Prabhav. At the same time, it has multi-systemic benefits on the patients. And it has a very good antiviral action. It was found to be effective in treatment of sore throat, cough, and bronchial catarrh. Glycyrrhiza glabra helps to expel congestion in the upper respiratory tract and accelerates the tracheal mucus secretion. Glycyrrhiza glabra inhibits the growth of viruses, including herpes simplex, varicella zoster, and of Japanese encephalitis, influenza virus, vesicular stomatitis virus, and type A influenza virus. So it has been efficacious in taking care of so many virus diseases, and hence it has been applied here in COVID cases also. Glycyrrhiza glabra used in AIDS patients with high CD4-CD8 ratio in asymptomatic carriers or patients with AIDS-related complex showed an increase in these cells. Significant clinical improvement was achieved in almost half of the treated patients. Glycyrrhiza glabra not only possesses an inhibitory effect on HIV replication, but also has interferon-inducing and natural killer-enhancing effects. Glycyrrhiza glabra is effective in preventing the development of AIDS by raising the number of CD4 positive T lymphocytes. Now, glycerin is an active component of liquorized roots and replication of SARS-associated coronavirus. Glycerin inhibits SARS-associated coronavirus replication in viro cells with a selectivity index of 67. In addition to inhibition of virus replication, glycerin is able to inhibit absorption and penetration of the virus during the early steps of the replicative cycle. A high concentration of glycerin completely blocked replication of the virus. This is very, very important. So the level of glycerin has to be maintained up to the level of 4,000 milligram per liter, and this has the capacity to block the replication of virus. Glycyrrhiza glabra inhibition of virus replication, modulation of membrane fluidity has been established. Now, amla, the world's best oxidant, we have been using as the most common, formulation of amla, Chyawanprash. This has been the first line of medical management in Ayurveda also, and as a household name in many, families all across India. The Chyawanprash, as soon as you get a cold and cough bout, you should be taking this. And the basic ingredients is the amla. The extracts from various parts of Umbilica officinalis, especially the fruit, contains numerous phytoconstituents that with higher amounts of polyphenols like gallic acid, different tannins, minerals, vitamins, amino acids, fixed oils, and flavonoids like rutin and quercetin. Phyllanthus umbilica, an excellent source of vitamin C ascorbate, has been found to improve the natural killer cell activity and antibody-dependent cellular cytotoxicity. This has potent free radical scavenging activities that might prevent reactive oxygen species, inducing DNA damage and oncogenesis. Phyllanthus umbilica also inhibits apoptosis and DNA fragmentation induced by chromium. It has relieved the immunosuppressive effects of chromium on lymphocyte proliferation and even restored the interleukin-2 and gamma IFN production considerably. Phyllanthus umbilica fruit is considered as an adaptogenic that improves immunity, improves both cell-mediated and humoral response. It is called as a Maharasayan in Ayurveda. It is used to promote health and lifespan by increasing defense against diseases, assisting the aging process and revitalizing the body in debilitated conditions. Amla is referred to as Maharasayan due to its diverse therapeutic potential. The clinical efficacy of the fruits is held in high esteem in Ayurveda, and the fruits of amla are used in Ayurveda as a potent rasayan. It is good for all seasons and all doshas. It is especially effective in hot season to cool pitta dosha.
It is a good rasayan for people with Pitta and Vata body types. The fruit has been described as having a sour taste with a cooling potency. You can see the effects. It increases the free radical scavenging antioxidant effect. It has a raised immunomodulation and immune stimulant response. It has an adaptogenic effect, antioxidant enzymes. It reduces mutagenesis, DNA damage, and DNA plastogenesis. It reduces the lipid peroxidation. It checks inflammation and the oxidative stress. So, amla has been used as a maharasan and it has been incorporated in the immune health. Thank you all for your patient listening. And these are the references from which these slides have been crafted. And thank you once again, Mankind. Thank you, Dr. Ashutosh, and thank you very much, Dr. Piyush Juneja, for giving me this platform and this opportunity to present my views from this platform. Thank you, Dr. Preeti, for such an engaging talk, enlightening us. I will just request you to unshare the screen. We will now take question answers which have been asked by our audience. I will request all the audiences who have joined through direct link on India and Vaidya site, so they can also post their questions on the comment section through Facebook Messenger or WhatsApp chat, so we can answer them as well. So my first question, Dr. Preeti, is to you is that there are a lot of doctors who are asking that what can be a safe immunomodulator in a pregnant woman, depending upon different stages of the pregnancy. So if I'm talking about, say, first trimester, second trimester, third trimester, so what can be the safe alternatives that we can use in that particular condition? I think regulated and metered dose of mulethi, like Glyceris gabra, Umbilica officinalis, tulsi, all these can be used in pregnant ladies, just that we have to be very, very specific. If the prakriti is pith, we have to take the aqueous extract, we have to modulate the dose according to the time of the day and according to the status of the patient, the basic inherent constitution, the prakriti of the patient. We can administer all these in meter doses. That is not an issue at all. So if I can say that if I'm talking about a first trimester, so maybe we can start with a combination of ashwagandha, yashtimadu, tulsi, giloy, kalme, to an extent that if I give it in, say, meter dose 1 OD, so that will be sufficient enough. That can definitely be given. The only thing is that we should not be giving any medicines which have विरेचन प्रभाव, जो अपान वायु की गति को बढ़ाते हैं, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए. एंड आई डोंट थिंक एनी ऑफ दीज हैव विरेचन प्रभाव. पित्त विरेचन है, विरेचक प्रभाव किसी भी औषध का नहीं है, तो हम सेफली दे सकते हैं हमको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. Fine, ma'am. So there is one question which has been repeatedly asked in a lot of webinars which we have held recently, but I suppose we have to just present it in a different manner. Dr. Shivik का question है कि हमें ये immunomodulators की हम बात कर रहे हैं आज की डेट में, तो ये रसायन द्रव्य हमें पेशेंट को कब तक देना चाहिए? मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी होगा कि क्योंकि पेशेंट्स बहुत जल्दी एक दे लूज होप और दे लूज ट्रैक कि भाई अब तो सब कुछ ठीक हो गया है वाली सिचुएशन, जैसा हम आजकल रूटीन में भी देखते हैं कि अब तो एक जो फर्स्ट वेव थी या जो सिवियरिटी थी वो तो जा चुकी है, तो अब हम कब तक गिलोय खाते रहे, कब तक तुलसी खाते रहे, कब तक अश्वगंधा खाते रहे. तो मेरे ख्याल से दो पार्ट होंगे क्वेश्चन के. एक तो हम कब तक इम्यूनोमॉड्यूलेटर दे सकते हैं. सेकेंड पार्ट है कि पेशेंट जब क्लिनिक में आ रहे हैं तो उसे किस तरीके से कन्विंस करना है कि नहीं भाई अभी 1 महीने खाया है, 2 महीने खाया, अभी कुछ दिन और खाना है, शायद सेकेंड वेव अभी आएगी, या जो सिवियरिटी है वो ठंड के टाइम में नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली राइज करेगी. तो आपका ओपिनियन इसमें? मैं पर्टिकुलरली अपने पेशेंट्स को हमेशा कन्विंस करती हूँ कि नित्य संशोधन, जैसे हम वीकेंड में मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आप त्रिफला से संशोधन करें. कोष्ठ शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स हैं उनको रेगुलरली, टाइमली एंड पीरियोडिकली हमें एवैक्यूएट करते रहना है बॉडी से.
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जहाँ तक रसायन प्रयोग की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉल्यूशन के दौर में, इन इन्फेक्शंस के दौर में और इतने सारे स्ट्रेस को लेते हुए हमें जो रसायन प्रयोग के लिए नित्य अभ्यस्यमान रहना चाहिए, और उसको हम वेरिएबल रख सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द डिजीज या अकॉर्डिंग टू द प्रकृति ऑफ द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ सीजन हम रेगुलर उसको चेंज करते रहें. अब जैसे हरितिकी प्रयोग बताया है कि हरितिकी का प्रयोग डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट तरीके से करना है, जिसको हम ऋतु हरितिकी प्रयोग बताते हैं. तो एक सिंपल ऋतु हरितिकी प्रयोग भी अगर हम अपने पेशेंट्स को कराएं रेगुलरली, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. और रसायन प्रयोग का ये है कि उसको एज अ पार्ट ऑफ दिनचर्या, एज अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन लेना चाहिए. आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है रसायन जो है वो नित्य अवश्यमान रहना चाहिए हमें रसायन प्रयोग के लिए. और पेशेंट्स को हम हमेशा ऐसे कन्विंस कर सकते हैं कि हम डेली इतना ज्यादा हमारा एक्सपोजर है इन्फेक्शंस के प्रति, वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शंस. तो हमें अपनी जो देह बल को है उसको उन्नत करने के लिए हमें रेगुलर इनपुट करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए रसायन प्रयोग करना बहुत जरूरी है. तो इसलिए वी शुड नॉट कंसिडर दिस एज अ पार्ट ऑफ मेडिकेशन. वी शुड फोकस कि इसको हमें विजुअलाइज करना चाहिए. वो जो स्वास्थ्य रक्षणम वाला कंसेप्ट है, उस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम पेशेंट्स को कन्विंस करते हैं कि दिस इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ इन योर हेल्थ, दिस इज अ प्रोटोकॉल ऑफ वेलनेस. It is not necessary that you adopt consuming medication only when you are ill. You have to preserve wellness, and for this you have to take all the rasayan dravyas periodically. मैम एक श्लोक भी है आयुर्वेद के अंदर में, नासा शीर्षो द्वारम, और उसी पे आजकल एलोपैथी में भी एक चलन शुरू होने वाला है जिसमें शायद कोविड आयोडीन का स्प्रे, नेजल स्प्रे, या हम इन चीजों का यूज कर रहे हैं. तो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में नस्य का आपने कितना रोल देखा है, और हम कितनी डोजेज में कौन सा ऑयल नस्य में यूज कर सकते हैं? सर, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट. मैं प्रैक्टिकली नस्य अपने हर पेशेंट को देती हूँ. I advocate Pratimarsh Nase left and right to all my patients, right from patients of thyroid to PCOD to stress to anything, obesity also. मैं obesity में त्रिफला तेल का नस्य पेशेंट्स को advocate करती हूँ, Pratimarsh Nase, and बहुत अच्छे responses हैं नासा ही शीर्षो द्वारम, because हमारी हायर मेंटल फैकल्टीज जो रेगुलेट करती हैं हमारी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को, उनको हमें तृप्त रखना और उनको हमें रेगुलेटेड रखना बहुत जरूरी है. तो बहुत अच्छे से बताया, और यहाँ भी हमने जैसे स्लाइड्स में देखा कि ऑल्फैक्टरी बल्ब के थ्रू कोरोना वायरस ट्रांसमिट होता है. जो नस्य है वो एक अणुप्रणव भाव से एक कोटिंग बना देता है हमारे पूरे नेजल म्यूकोजा पे, और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट तक पूरा एक कोट रहता है. तो जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो इस लोकल लेवल पे ही चेक किए जा सकते हैं नस्य के द्वारा. और नॉट ओनली इन्फेक्शंस, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जितने भी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, राइट फ्रॉम इंसोम्निया ड्यू टू रात्रि जागरण, मतलब क्रॉनिक रात्रि जागरण, जैसे जो बच्चे कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, 6 मंथ्स की डे एंड नाइट शिफ्ट रहती है उनकी, और वो जब स्विच ओवर करना चाहते हैं तो कर नहीं पाते बहुत इजीली. तो मेडिकेमेंट्स की डोज जो है वो बहुत कम हो जाती है. डिजीज का जो ट्रीटमेंट जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाता है नस्य देने से. दिस इज अ सप्लीमेंट एंड एडजुवेंट थेरेपी जो मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करती हूँ विद डिफरेंट द्रव्यस. और आप ऑब्जर्व करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो रिजल्ट्स हमें मिलने चाहिए 20 डेज में, वो हमें बहुत पहले मिलते हैं. पेशेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज वो उनको खुद ही करना है. प्रतिमर्श नस्य हम खुद ही एडवोकेट कर लेने के लिए बोलते हैं. Any time of the day, preferably just after bath, or when they are about to move out of the house, or when they are relaxing. Many हमारे पास बहुत सारे काल बताए हैं नस्य के. तो प्रतिमर्श नस्य में usually I start from 2 drops, raising up to 6 drops according to the adaptability of the patients and convenience of the patients. और इस जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो, इसमें कौन सा
तेल इस्तेमाल करते हैं, अणु तेल, षडबिंदु तेल या सिंपल तिल का तेल, क्या प्रेफरेंस है? अणु तेल भी, मैं तो सरसों तेल भी, साउथ नॉर्थ इंडिया में बहुत से लोग सरसों तेल भी यूज करते हैं। इवन सरसों तेल बहुत अच्छा जंतुघ्न और कृमिघ्न है। मैं तो सरसों तेल भी पेशेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो लो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के हैं, जैसे बहुत सारे जो हमारे डेली हमारे कांटेक्ट में लोग आते हैं, उनको तो अगर अणु तो उनको खरीदना और एज मेडिसिन यूज करना, तो उनको मैं प्लेन सरसों तेल का भी बताती हूँ कि आप डेली नस से लीजिए नहाने के बाद। दैट इज ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव आई फाउंड। क्योंकि जितने हमारे जो 4th क्लास वर्कर्स हैं, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हम देखते हैं रोज सड़कों पे झाड़ू लगा रहे हैं, उन लोगों का एक्सपोजर इतना ज्यादा है, और उनके पास ये नहीं है कि हम उनको अणु तेल बोले और वो जाके लें और लें। तो उनके लिए एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन फॉर इन दिस कोविड टाइम्स, आई एम सजेस्टिंग देम टू यूज सरसों तेल नस से आल्सो, एंड they are taking because it's more convenient for them. They are not ready to purchase. So any oil which has cremign and jantugn property, apart from clarifying the respiratory passages, अणु तेल तो यूज किया ही है, बट साथ साथ मैंने सरसों तेल भी बहुत लोगों को बताया है, and they are very happy with the responses. Despite being exposed so very frequently, they have not got the disease as on date. Great, ma'am. There is one question from website that if you have any case experience with, say, any of your case experiences in COVID-19 पे आपका कोई case study हो, आपने personally किसी COVID-19 पे? नहीं, एक नहीं, बहुत सारी स्टडीज हैं। जो फर्स्ट केस मेरे पास आया, दिस वाज अ पेशेंट विद कोमॉर्बिडिटी ऑफ डायबिटीज, एंड ही हैड सम autoimmune neuromuscular degenerative problem also, for which he was taking my medication since last 5 years, and he was a stable patient. So this patient came to me, and उन्होंने मुझे symptoms present किए. I asked them to go for a investigation, which he was initially very reluctant, but on the second day, on pursuing by his family, because he had 2 6 months old granddaughters जिनको वो हैंडल करते थे, तो फैमिली के परसुएशन पे उन्होंने टेस्ट कराया एंड ही वाज पॉजिटिव। तो उनको होम आइसोलेशन में रखा गया, और मैंने उनको 4 चीजें दी। एक तो आयुष क्वाथ जो मिनिस्ट्री का रिकमेंडेशन था, एक अणु तेल नस से, थर्ड वाज शुंठी प्रयोग, जिसको मैंने एंडोर्स किया लोक आयुर्वेद के बैनर पे भी, और उसका बहुत अच्छा रोल देखा कि शुंठी का नस से, प्रथमन नस से, और दिन में 2 बार, और उसका शुंठी का प्रयोग, क्योंकि वो बहुत अच्छा दीपन पाचन भी है, और बहुत अच्छा आम पाचन भी है, और बहुत अच्छा एंटी टॉक्सिसिटी द्रव्य भी है। उसका ओरल प्रयोग और उसका नस्य, अलॉन्ग विद नस्य ऑफ अणु तेल एंड आयुष क्वाथ प्रयोग, तो ये 3 से 4 चीजों को हमने एज प्रोटोकॉल फॉलो किया, और मैंने अपने पर्सनल एंड पे अराउंड 300 किट्स बनाई इन्हीं 3 से 4 चीजों की, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। और वो पेशेंट तो रिकवर हुआ ही, बिकॉज इसके साथ साथ मैंने गुड़ूची घनवटी भी दी उनको। 4th कॉम्पोनेंट वाज गुड़ूची घनवटी। उनको फीवर था, सेकेंड डे द फीवर सबसाइडेड एंड देयर वाज नो रिलैप्स। उनको पैरासीटामोल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सारे केसेस में देखा कि पैरासीटामोल से भी रिस्पांस नहीं मिला, पेशेंट्स को मेफेनेमिक एसिड पे जाना पड़ा। बट अगर हम लोडिंग डोज संजीवनी, मैंने 2 QID भी दी है, 4 टाइम्स अ डे भी दिया है, एंड पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। द सेम फैमिली, द फैमिली ऑफ दिस पेशेंट, इनके 8 फैमिली मेंबर्स थे, और 8 फैमिली मेंबर्स ने फिर मुझे अप्रोच किया और कहा कि हम लोग क्या करें कि हम लोग संपर्क में आए हैं कि हमें ये सब चीजें पॉजिटिव नहीं हो। तो उनको भी हमने सेम प्रोटोकॉल फॉलो किया। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को हमने ये चारों चीजें दी, आयुष क्वाथ, शुंठी प्रयोग, अणु तेल प्रयोग और संशमनी वटी। जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको हमने संशमनी वटी 2 BTD की डोज में दी। एंड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, उन 8 में से, मतलब उन 7 में से, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट ही थे, उन 7 में से कोई भी जो फैमिली मेंबर है वो पॉजिटिव नहीं है। और इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि जिनको हमने इस तरह की किट्स डिस्ट्रीब्यूट की, अराउंड 300 प्लस किट्स दी, और जिन लोगों ने भी इन किट्स को प्रयोग किया, ऑल आयुर्वेदिक मेडिसिन, उनमें से कोई भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं आया। Great, ma'am. Thank you very much for this insight.
एक मैम कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन, जैसे आपने एक एमएस के पेशेंट की बात करी है, तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन पेशेंट हैं जिनके साथ में कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, डायबिटीज। तो उन पेशेंट को हम गिलोय या कालमेक का जो कॉम्बिनेशन है, क्या वो सेफ रहेगा उनके लिए? उनको डायबिटीज में कोई हेल्प करेगा या उनको कुछ और रिकमेंड करेंगे? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिलोय और कालमेक का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है एंड डेफिनेटली ये तिक्त रस के द्रव्य हैं और डेफिनेटली ये कोमॉर्बिड पेशेंट्स में डेफिनेटली हेल्प करेंगे और हमारी ऑब्जर्वेशन है कि इन्होंने किया भी है। दे हैव हेल्प टू, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सीनियर सिटीजन में हमें उनका मॉरल बूस्ट करने की जरूरत रहती है, बिकॉज उनका मॉरल बहुत फ्रेजाइल होता है, वो बहुत डेलिकेट होते हैं मेंटली, तो उनको वो बूस्ट अप करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो काउंसलिंग इज ऑफ मच इम्पॉर्टेंस। और जिन जिन पेशेंट्स को हमने टेलीफोनिकली काउंसिल किया या उनके फैमिली मेम्बर्स को रिक्वेस्ट की कि आप उनको रेगुलर काउंसिल करें और उनको उनके मॉरल्स बूस्ट अप रखें, बिकॉज वो जो एक ट्रॉमा है इस चीज का, और इतनी सारी न्यूज डेली डे इन एंड डे आउट फ्लैश होती हैं। सीनियर सिटीजन्स आर वेरी वेरी विजिलेंट दीज डेज, वो न्यूज जरूर देखते सुनते हैं। उनको लगता है अभी कोरोना हो गया तो दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी। सो दैट मॉरल बूस्टिंग जो हमें सत्वावजय चिकित्सा के साथ साथ ये सब कुछ दिया, तो दे वर एबल टू कम आउट ऑफ इट वेरी वेरी नाइसली। अपार्ट फ्रॉम काउंसलिंग, कुछ पेशेंट्स का ऐसा भी कहना है कि क्या गिलोय का जो लीव्स है उनका रस भी हम निकाल करके फ्रेश रस जूस जो है लीव्स का, जैसे हम बोलते हैं, उसको रस देना चाहिए? तो क्या इसका भी आपने कुछ यूजेज करा है इस मैंने एक्चुअली क्या है, जो होम क्वारंटाइन पेशेंट्स हैं या दूसरे पेशेंट्स हैं, उन लोगों ने खुद क्योंकि इतनी स्ट्रांगली इस मैसेज को स्प्रेड किया गया, तो प्रिपेयर्ड गिलोय रस की बॉटल्स बहुत बिकी हैं, बहुत लोगों ने लिया है, विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर्स भी उन्होंने लिया है। पर मैंने हमेशा प्रोसेस्ड संशमनी का ही यूज किया है, या फिर उनको बोला है कि जो गिलोय का जो स्टिक है उसको वो फ्रेश बॉईल करके लें। फ्रेश स्वरस का प्रयोग मैंने पेशेंट्स में नहीं कराया। मेरे ख्याल से शायद जो हमारा एक द्रव्य निग्रहण की बात करें तो शायद गिलोय का स्टेम या जो गांठ है उसका उपयोग ज्यादा बताया गया, rather than कि जो हम लीव्स की बात करें, तो वो भी एक पार्ट रहेगा, क्योंकि जितने भी एक्टिव कंपोनेंट होंगे वो स्टेम में ज्यादा आएंगे बजाय कि लीफ के। तो दैट इज वन ऑफ द पार्ट। इसके अलावा शायद आपने कुछ पेशेंट्स में भी देखा होगा कि आयुष पाथ जब देते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम कंप्लेंट करते हैं लोग, तो उसका मतलब क्या सोल्यूशन हो सकता है कि एसिडिटी हो रही है, पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि पेट में जलन या इस तरह की है, और क्या प्रेगनेंसी में आयुष पाथ अगेन सेफ है? एक्चुअली क्या है कि जब कोरोना का एकदम अपसर्ज हुआ तो वसंत ऋतु थी और एक पर्टिकुलर काढ़े का फॉर्मुलेशन बताया गया और वही प्रोपेगेट किया गया, और लोगों ने उसको इतना ओवर एंथुजियाज्म से एम्ब्रेस किया कि वो लेते ही चले गए और लेते ही चले गए। कोई भी मेडिकेशन, कोई भी द्रव्य किसी भी तरह से उसको सेल्फ मेडिकेशन की तरह नहीं यूज करना चाहिए, एंड दैट टू फॉर लॉन्ग टर्म। पेशेंट्स को ये चाहिए कि वो किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन को संपर्क करें और उनसे अपनी डोज एंड डोजेज रेगुलेट करवाएं। इट इज नॉट दैट कि अगर एक एडवाइजरी आ गई तो उसको लॉन्ग टर्म शिशिर से लेके आज हम शरद में पहुंच गए, तो सॉरी वसंत से लेके आज हम शरद में पहुंच गए, तो तभी तक वो सभी ऋतुओं में वही चला जाए। तो हमने अपने पेशेंट्स के लिए आयुष वात के साथ साथ उसके मॉडिफिकेशंस बताए कि किस तरह से लेना है उसको। जैसे उसमें मुलेठी की थोड़ी मात्रा अधिक कर दी या कुछ भी एक, क्योंकि वो स्निग्ध है और शीत है और उसको पित्त शामक है, तो इस तरह से। या फिर आप गिलोय को अगर दे रहे हैं तो गिलोय सत्व लीजिए साथ साथ क्वाथ में ऐड करके। तो जिन पेशेंट्स ने हमें कंप्लेंट किया उसको हमने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके उनको आगे लेने के लिए बोला। और उसका भी ये है कि एक ही चीज को आप लॉन्ग टर्म कंटिन्यू ना करें, क्योंकि वो और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द, मैंने फिर बताया कि काल और व्यय की अपेक्षा रखती है सभी औषधियाँ, तो हर काल में हर औषध का सेम प्रभाव हो
और हर वय में और हर स्थिति में उसी औषध का सेम प्रभाव हो, ऐसा नहीं होता। तो पेशेंट्स को ये समझाना, ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता है, क्यों हम मेंशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन 1 वीक के लिए लेनी है, क्यों पर्टिकुलर मेडिसिन 15 डेज के लिए लेनी है, क्योंकि ऋतु संधिकाल और ऋतु परिवर्तन में हमें औषध की जो स्थिति है उसका पुनः विनिश्चय करना जरूरी होता है। और शायद ये एक फिक्स डोज बता दी गई, जैसे दालचीनी 2 भाग लेनी है, काली मिर्च 1 भाग लेनी है, तो शायद वो हर पेशेंट की आयु है जिसे आप बता रहे हैं वो फिट नहीं थी, तो शायद उसको मॉडिफाई करना भी अकॉर्डिंगली ज़रूरी था, और वो शायद नहीं हुआ है। एंड दैट्स द रीज़न के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स या एडवर्स जो भी हमें पेशेंट्स की कंप्लेंट मिलती है वो इसके अलावा मैम कुछ कार्डियक पेशेंट्स भी होते हैं हमारे पास, क्योंकि एस इनहिबिटर मतलब एस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पे ये ज़्यादा काम कर रहा है एस 2 रिसेप्टर के ऊपर। तो क्या गाइडलाइंस है, क्या आपको लगता है कि कौन से हर्ब या कौन सा एक कॉम्पोजिशन जो कार्डियक पेशेंट्स के अंदर में इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा, और वो कुछ समय लगातार लेना चाहिए, ऑफ कोर्स इन द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। तो हमारे जो डॉक्टर्स अभी अटेंड कर रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक आप गाइडलाइन बता सकते हैं कि क्या चीज़ यूज करेंगे? कार्डियक पेशेंट्स के लिए मुझे लगता है जो अम्ल वर्गीय द्रव्य हैं वो बहुत इफेक्टिव है। उसमें आंवला है, जैसे पॉमग्रेनेट है, इन सब चीज़ों को हम अगर रेगुलरली इंक्लूड करें तो बहुत अच्छा हम फायदा दे सकते हैं। या अर्जुन है, अर्जुन क्षीर पाक का प्रयोग किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम पैरेलली इनकॉर्पोरेट करें और मॉनिटर करते रहें स्टेटस, और उसके बाद हम इसको एक मीटर्ड और रेगुलेटेड डोज में दें, तो दिस कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू आवर पेशेंट्स। डेफिनेटली मैम। एक फॉलोअप क्वेश्चन है जो मुझे इस वेबिनार में भी पूछा, पहले भी पूछा है, क्या अश्वगंधा का इस्तेमाल सेफ है कार्डियक पेशेंट्स में अगर हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दे रहे हैं ड्यूरिंग दिस कोविड-19 टाइम पीरियड? काफी प्रमोट हो रहा है। कार्डियक पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ऐसा मैंने कहीं किसी स्टडी में नहीं पढ़ा, एंड आई थिंक दे सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा अडैप्टोजेनिक और बहुत अच्छा डी स्ट्रेसर है, so it can be safely given according to me, and I have been giving it to my patients also. Fine, ma'am. So I suppose we are done with the question answer round. So I thank all Dr. Preeti for his elaborative session of this question and answer. And I thank above all to my attendees who have taken time out of their busy schedule and attended this webinar and making this webinar interactive and insightful. आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे उनसे डेफिनेटली हमें और इंसाइट मिला. And we end this live webinar here, and we'll be meeting you soon with another speaker in next couple of days. Thank you very much. Thank you, one and all. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Dr. Piyush, can we close the session?